सो रमा देवी जहाँ भावुची किसी जानी हजबैंड भी बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छी आम इंडिपेंडेंस मूवमेंट रे सो कंट्रीब्यूशन रमा देवी सो रमा देवी चौधरी जोटा कि 1899 रे जन्म होते 1921 माने अराउंड 22 इयर्स होते सी कि फ्रीडम मूवमेंट नेशनल मूवमेंट रे जॉइन करते she used to go from village to village to encourage women to join the independence movement रो से पदयात्रा करते same year they joined Indian National Congress and started wearing khadi. In 1930, she took active part in the salt satyagraha movement at Odisha level, and she went to Inchudi and Srijang basically, and other activists सहित से जाइଥିଲେ. So तांकर लाइफ रे से बहुत थर जेल जाइचंती. She and her colleagues were arrested in November 1930 and placed different jails of British India. And she was arrested several times 1921 re, 1930, 1936 re, and 1942. With other women independence activities like Sarala Devi, Malati Devi Chaudhary, या Malati Chaudhary, ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, and so she attended 1931 Karachi session. Very important this one. 1931 Karachi session also she attended of the Indian National Congress. So ये करथिले ये सेठ जाकी कोन करथिले ना से रिक्वेस्ट करथिले कि नेक्स्ट कांग्रेस रो सेशन जेमिति ओडिसा रा हो नेक्स्ट कांग्रेस रो सेशन जेमिति ओडिसा रा हो से जाकी रिक्वेस्ट करथिले. In 1932, after her release from the Hazaribagh jail, she was actively involved in Harijan welfare. Actively involved in Harijan welfare involved थे. She started ये बहुत इंपोर्टेंट अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण समिति माने बेसिकली जोटा कि छुआ अछूत कथा कहउची अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गांधी जी फॉर द इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये बहुत ही इंपोर्टेंट ये पॉइंट लिखिया पड़ियो तुमको. ये जो किछि पांच सातरा पॉइंट तुम्हें यस गोपबंधु चौधरी वेरी गुड. सो पांच सातरा पॉइंट तुम मन रखिया पड़ो. ट्राई करो एबे ही लिखि दियो एग्जाम दिन ताकू खाली रिवाइज करी पळै जिवो. ए जो पॉइंट गुडा जहां भी अछि ट्राई करो एबे ही लिखि दबो ताकू एग्जाम पूर्व रिवाइज कर. शी वाज क्लोजली इन्वॉल्व इन गांधीज 1932 and 1934 visit to Odisha, as well as visits of Kasturba, Sardar Patel, Rajendra Prasad, Maulana Azad, and Jawaharlal Nehru and others. मध्य सी इन्वॉल्व थे ताको सहित. She started ashram at Bari. Bari basically कौन कल बरी एबे प्रेजेंटली तुमरो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे पाइबो बरी एंड व्हिच गांधीजी नेम सेवा घर बोली नेम देथिले. सो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 member of Ramadevi entire family including her husband Gopal Chaudhary were arrested. Okay, and after the death of Kasturba Gandhi, Gandhiji assigned her work as a representative of Odisha chapter of Kasturba Trust representative ये थिले किए हमर रमा देवी चौधरी. सो माँ तांको कहा जाउतला या रमा देवी कहा जाउतला. तांकर कंट्रीब्यूशन केबे भी आमे भूली परिबा नाही. ओके बुझियला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रु क्विट इंडिया मूवमेंट पर्यंत. ओके सी गोटे स्टॉलवार्ड थिले ओडिशा नेशनल मूवमेंट रो बहुत बड़ नेम थिला और बहुत बड़ तांकर कंट्रीब्यूशन देले. गांधी जी पर्सनली तांको मध्ये जानिथिले और पर्सनली तांको सहित डिस्कशन में देन मधुसूदन दास एज ए मेकर ऑफ मॉडर्निटी. ये बहुत इंपोर्टेंट. मोर मॉडर्न ओडिशा रे तुम देखिबो जो भले सिचुएशन देखुछ एबे से भले नथिला. ये किछि पार्ट नॉर्थ ओडिशा बेसिकली बेंगल से अटैच थिला. तुमरो साउथ ओडिशा जोटा कि माड्रास प्रोविंस बरहमपुर वगैरह गंजाम वगैरह ये सब माड्रास प्रोविंस से अटैच थिला. तुमरो वेस्टर्न ओडिशा सी मराठा अंडर किछि थिला. तो ए भले ओडिशा जो प्रेजेंट मॉडर्न फॉर्म ओडिशा वाज नॉट जोटा कि एबे जोटा देखु जो सी भले नथिला. तो ये भले सेव करने पे मधुसूदन दासंकर कौन अच्छी से कह जाए मधुसूदन दास एज ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न ओडिशा. So in 1848, born in 1848, April 18 in the Satyabhampur, Cuttack district रे. Father थिले चौधरी रघुनाथ दास and mother पार्वती देवी. So he was a first Odia. এটা बहुत important point मन दिथिबो. First Odia to fetch degree of MA BL
from Calcutta University. Then he was popularly known as Madhu Barrister, respectively regarded as address Utkala Gaurav ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ Utkala Gaurav. He was deeply moved and shocked to see discrimination made against the Odiyas by administrative authority. He was convinced that miserable plight of the Odiyas was only due to the apathetic and indifferent attitude of the authority toward the interest of the Odia people. ସେ କହିଲା ଅଥରିଟି ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଆ could not stand united only because their annexation with three different provinces. Okay, ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଅଛି so he took a solid stand for the unification of scattered Udiyas by organizing and mobilizing strong public opinion among the Udiyas and pressurized the British ruler for the unification of scattered Udiya speaking tract for the socio-economic and cultural growth of the Udiya at large. So ओडिया स्पीकिंग पीपल को जो स्कैटर्ड ही अछंती ताको यूनाइट करिया पई ये ब्रिटिश को कहिथिले एंड मधुसूदन दास ऑर्गेनाइज उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस सो जो गोटे कॉन्फ्रेंस बेले जोटे कि यूनाइटेड ओडिया को समस्त को मिसी के रखिया पई कॉन्फ्रेंस टू फॉर्म चैनल for discussion and negotiation with authorities to solve the problem and open avenues for new era of unification integration and played a very initial phase रे बहुत बड़ रोल प्ले करथिले ये इनिशियल फेज रे बहुत बड़ रोल प्ले करथिले जो यूनाइटिंग करिया पे ओडिसा सो उत्कल सम्मेलन केम टू एक्जिस्टेंस इन द ईयर 1903 विथ द एक्सटेंशन ऑफ उत्कल सभा ओके उत्कल सभा परे ये उत्कल सम्मेलन हला it spearheaded the movement of unification. So उत्कल सभा परे उत्कल सम्मेलनी एंड उत्कल सम्मेलनी बेसिकली ये मूवमेंट को आगु को बढ़ेला ओके ओडिया स्पीकिंग पीपल बेसिकली वन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आनिया पई एवं ये प्लान कले एवं ता पई काम कर लढिले सो सेहि पई गौरव कुआ जाय तनको मधुसूदन दास को so it went up to such an extent that the freedom movement and Odia movement got interlinked under the stable leadership of Mr. Das, Gopal, Utkala Gaurav Madhusudan Das and Utkala Mani Gopal Das भी मध्य एथिरे include हेले. So this situation implied people to join hands with Mr. Das in the forum of Odia movement than the Congress movement. Basically, what a united front रो ये कले. This situation impelled the people ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କଲା କି ଜଏନ୍ କର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଜ ୱେଲ୍ ଏଜ ନ୍ୟାସନାଲ इंडिपेंडेंस ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ और उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस मेंटेन इट्स सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम कांग्रेस बेसिकली देखो कांग्रेस अलगा ये मूवमेंट अलगा बट जेहेतु टिके फोर्स मिलिला उत्कल यूनिफिकेशन ପାଇଁ या उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस या उत्कल सम्मेलन ପାଇଁ ये फोर्स मिलिला as a legislator, Madhusudan Das acclaimed as a commendable height of wide appreciation position. He was a leader of versatile performance and could arrest appreciation and love of the people and the government during the tenure of his ministry. In spite of his popularity, he resigned 1923 on a matter of principle. It speaks his integrity. So, देखिबो सी ताको लाइफ रो जेतले थिले ठीक समय रे सी बेसिकली ट्राई बहुत करछन और ताकर जो प्रयास बहुत बड़ रोल प्ले करिछि इंडिया को एटे यूनाइटेड करिया पे सॉरी ओडिसा को यूनाइटेड करिया पे बट सक्सेसफुली एटा 1936 रही हला so she resigned then his journalistic approach was reflected in his weekly paper the Odia एटा भी लिखिबो ए पॉइंट भी लिखिबो weekly newspaper से कहारो Nada Odia started in 1917. It was his intense desire to highlight the interest of Odias, criticizing the government policy through his channel of weekly paper. He was very genuine and empathetic in his voice and action. He was a national pioneer and staunch patron of Odisha development. Odisha रा development ପାଇଁ बहुत बड़ा supporter ଥିଲେ and patron ଥିଲେ. So he breathed his last on the February 4, 1934. He was basically 1936 ରେ ଆମର ସିନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ. So he was bona fide benefactor and nationalist in true sense and acquiring the first master degree
and the first BL degree as a first Odia. So he was the first Odia to be a member of Legislative Council and first Odia to sail abroad भी जाइଥିଲେ इंग्लैंड जाइଥିଲେ दीथर जाइଥିଲେ and have membership of Central Legislative Assembly and the first Odia and the first Indian minister ମଧ୍ୟ ଥିଲେ. So ଏତିକି ଦେଖିବା. So ଦେଖ ଦିଟା क्वेश्चन ଆସିପାରେ. मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत फेवरेट क्वेश्चन ओपीएससी रो. तो क्वेश्चन एमिति आसीपारे रूल ऑफ गोपबंधु दास, रूल ऑफ गोपबंधु दास एज ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किंबा एइथर भी आउ जने रूल प्ले करथिले किए गजपति. गजपति महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव एज मेकर ऑफ मॉडर्न ये दी सेइथि पे मु दीटा देई दीची. कोनटा भी क्वेश्चन आसले तुमे ट्राई करियो जेमति एटा करियो. ओके व्हिच एवर वे यू कैन ट्राई. So Maharaja Krishna Chandra Gajapati Narayana Singh Dev is a maker of modern India. So ये कौनटी पाराला खेमटी ना याकर कैपिटल थिला करे चले. Born in 27/8/1982, educated in Madras and assumed the rulership in 1930. An enlightened, benevolent ruler, a patron of education and culture of and organized the annual session of Utkala Union Conference at Parla Khemandi in 1914. उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस किए स्टार्ट करथिला गोपबंधु दास. तामाने गोपबंधु दास सहित भी ये लड़ुथिले. बट ये आउ जेहेतु ये राजा थिले ये याकर इंपैक्ट टिके बेसी थिला. माने बेसी इन द सेंस कि लेटर पार्ट कोन देखिबा. 1960 he led the light railway through his estate connecting Nuapada with Paralakhemudi. So let down ओडे रेलवे को लेट डाउन कले 1960. He set up big library in his palace for research scholar, an important member of Justice Party of Madras. ये जेतले गजपति सेतले माद्रास प्रोविंसेस अंडर थिला. member of Royal Agriculture Commission 1927, member of Madras Legislative Assembly Council ये member थिले. तो जानि पाला माद्रास एसमरे ये हमरे थिला. So he represent case of Odisha. So he represent case of Odisha जोंडे की कोंठी ए यूनाइटेड ओडिशा रो केस कोंठी नैथिले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जाइथिले लंडन रे 1930-31 रे एंड डिस्पोज बिफोर द जॉइंट पार्लियामेंट. से कोन हला ये निजे चाली गले पूरा. ये एक्चुअली यांकर स्टोरी गोटे कहूची जेतले गले ना एक्चुअली से सरी जाइथिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सरी जाइथिला. सो लंडन जेतले से पहुंचिले बट सरी गला परे भी ये जाइकी तांकर जो मेमोरेंडम थिला जाइकी देले एवं कही कि आसिले कि एटा करा जाऊ स्ट्रांगली ए जोंडे कि उड़िया पर्सन ऑफ पाराला खेमडी की ओडिसा रे रखा जाऊ बोली ये आ ओडिसा को गोटे सेपरेट प्रोविंसेस करा जाऊ बोली ये मेमोरेंडम दे कि आसिले जोंडे कि सेकंड राउंड सॉरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जाइले देले. He formed a non-Congress ministry in Odisha in 1937, and the government conferred him title of Maharaja in 1936 in recognition his honor and merit. In 1941 November, the Maharaja was invited to for ministry and assumed the chief ministership. And a member of Constituent Assembly of India 1947-50 ये थिले member थिले. And life नोने की member of Royal Society of Arts and Royal Aesthetic Society of London ये member थिले. And life member of Utkala University. Utkala University conferred on him the degree of LLD. And this Urdu illustration of Odisha passed in 1970. इंडिपेंडेंस पर्यंत एथिले वेरी इंपोर्टेंट फॉर पर्सनालिटी वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी एटा मन या भितरु मत लागुची जदि आसीबो या ऊपर तले ए दीटा भितरु आसीबो आ किछि बाहरु आसीबो नै. महाराजा कृष्णचंद्र सिंह देव नारायण देव गजपति जो आउ तोर मधुसूदन दास. देन आउ गोटे क्वेश्चन आसी पारे फकीर मोहन सेनापति. इंपोर्टेंट पर्सनालिटी ऊपर कोन आसी पारे फकीर से पॉइंट फॉर्म में सब मन लग दुथबो. इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा 5-6टा पॉइंट लिखि देबो सेई गुडा को छापी के आसीबो टिके बढ़ी चढ़ी के लिखि देबो तुमर 10 मार्क रु 20 मार्क भीतर हे जिवो. ओके तुमर क्वेश्चन तो 10 मार्क में 20 मार्क के क्वेश्चन आसुची तो तुम इजीली कर देबो.
ଏଇଥର ଶୁଣା ଯାଉଛି କଣ 15 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ତୁମେ ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଦେଖ, 15 ମାର୍କ ଲେଖିଦେବ ମାନେ 20 ମାର୍କ ବି ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ, ସେଇଥିରେ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ତ ତୁମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର କର। Then, rule of Fakir Mohan Senapati in establishing the distinct identity of Odia language and literature. Fakir Mohan Senapati, I hope all of you know this, known him, है ना, समझते जानी चलो नहीं। ये बालेश्वर जन्म होते 1843 रे। ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ओडिया लैंग्वेज एंड ओडिया लिटरेचर पाई, ओडिया लैंग्वेज और लिटरेचर पाई बहुत काम करते। एंड से फादर ऑफ ओडिया नेशनलिज्म मध्य कुआ जाए एंड मॉडर्न ओडिया लिटरेचर रो ये फादर बोली याकू कुआ जाए, एटा मन रखिथिबी, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तुमे केबे जन्म होइतिले कोन न लेखले चलिबो, किछि मैटर करेनी। ओके, याकर रूल कोन, फर्स्ट पॉइंट लिखियो, he played a leading role in establishing distinct identity of Odia language and literature. Then से बड़ा लिखियो ये फादर ओडिया नेशनलिज्म को आ जाए एंड मॉडर्न ओडिया लिटरेचर, ये दीटा पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट देखियो एग्जामिनर। Then he dedicated his life for progress of Odia language in the later in the late 19th and early in the 20th century. व्यास कवि, yes yes सत्यजीत, को देखियो। So story of Fakirmon is indeed story of जोने की renaissance of Odia literature को जाए। So besides he was a social reformer educator who used his pen to criticize and correct the aberration of prevalent in the society. He was known as father of Odia fiction of father को जाए, fiction लिखतांती। The four novel of Fakirmon Senapati written between 1897 to 1915 reflect the socio-cultural condition of Odisha during the 18th and 19th century. Okay, so socio-cultural condition Odisha उपरे से लिखिथिले चारिटा नोवेल। तो थ्री नोवेल कोन ना 6 माण 8 गुंठ, एटा समते जण जानिथिबो, मामून एंड प्रायश्चित, है ना, मामून देन लच्छमा, लच्छमा जोंटे की ये गोटे हिस्ट्रिकल रोमांस डीलिंग विथ एनार्किकल कंडीशन ऑफ ओडिशा इन द वेक ऑफ मराठा इन्वेजन ड्यूरिंग द 18th century इन्वेजन ऊपर सेटा लिखा हिची। आउ तीनटा नोवेल कोन ना 6 माण 8 गुंठ, मामून एंड प्रायश्चित, मामू मामू है सॉरी मामू, हां मामू। सो ये सोशल लाइफ और रियलिटी ऊपर, तो ये चारटा नोवेल भी मन रखियो। देखो फास्ट लिखिलो ताको कोन कुआ जाए, ओके, कोन तांकर रूल कोन अछि, कोंथि पई से फेमस, सेही जिंस सब बेले समस्त पाखरे लिखिबो, इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जदि पचारिबो। ही वाज रिटन he has written quite a few memorable short story such as Revati, Patent Medicine, Randipu Ananta, है ना, ये भी जानी थी समझते हैं। फकीर मोहन इज ऑल्सो राइटर ऑफ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ उड़िया, जोटा कि आत्मजीवन चरित, ये भी मध्य लिखिथिले उड़िया लैंग्वेज रे। So फकीर मोहन इज फर्स्ट फकीर मोहन फर्स्ट पोएम उत्कल, उत्कल भ्रमणम, ओके, उत्कल भ्रमणम appeared in 1892. It is not really a travel book, भ्रमण माने travel ना, travel, but rather a unusual and harmonious survey of the contemporary personality prominent in the public life of Odisha तांको विषय लिखा हैतिला, भ्रमणम लिखा हैतिला। सो ये तांकर बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथिबो, चारिटा नोवेल आउ तीनटा तांकर शॉर्ट स्टोरी, रेवती, पेटेंट मेडिसिन एंड ये सब तो रांडीपु अनंता, ये सब तुम देखिथिबो। रांडीपु अनंता माने कोन जानथिबो ना नहीं, ये तुमरो उड़िया ये रो पचारिबो, है ना, रांडीपु अनंता। सो थ्री नोवेल लिखि, जोंटी चारिटा नोवेल 6 माण 8 गुंठ, मामू एंड प्रायश्चित एंड लक्ष्मण। Then his other poems published are जोटे कि पुष्पमाला, उपहार, पूजा फूल, प्रार्थना एंड धूली। Okay, so he translated single-handedly the whole of Ramayana and Mahabharata. So he translated करथिले, for having translated both the Ramayana and Mahabharata single-handed and his wide versatility in the word letter, he popularly known as व्यास कवि। एटा मन रखियो, एटा भी बहुत इंपोर्टेंट, व्यास कवि ऑफ उड़ीसा। सो उत्कल मणि का कुआ गला,
उत्कल गौरव क्या कुआगला, व्यास कवि क्या कुआगला, फादर ऑफ ओडिया नेशनलिज्म क्या कुआगला, ये सब मन रख. He was also conferred the title Saraswati by King Bamra, जोटा कि फ्यूडल स्टेट ये थिले. A great lover and creator of new era of Odia literature, he was founder of organization called Utkal Bhasha Unnati Vidhani Sabha. Utkal Bhasha Unnati Vidhani Sabha, which was started in 1867 to create new awareness among the people of Odisha to propagate the Odia language. बुझीगला. सो फकीरमोहन सेनापति देखिले, महाराजा कृष्णचंद्र सिंह देव, महाराजा कृष्णचंद्र सिंह नारायण देव बेसिकली गजपति. देन आमे देखिले दी जनकर मधुसूदन दास, रमा देवी, रमा देवी बेसिकली रमा देवी चौधरी है ना. सो दीज आर इंपोर्टेंट पर्सनालिटी. आई होप या भीतर किछि आसीबा, आउ किछि पर्सनालिटी या कभी काली आउ देखिबा, काली किछि पर्सनालिटी देखिबा. देन देखिबा किछि मॉडर्न हिस्ट्री रो किछि हमर ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. क्वेश्चन आसीबो, Rayotwari settlement did not satisfy the aspiration of peasantry. Discuss. So, ସେଇଟା क्वेश्चन ଆସିଲେ କଣ ଲେଖିବ? ଆଗେ ଲେଖିବ କି ରେୟତରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଣ? ସୋ ରିୟତ ମାନେ କଣ? କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, ୟା ମାନେ କଣ? ସୋ ରେୟତରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କି फार्मर जी कल्टिवेटर निजे सेटा रियत कुआଯାଏ. ପିଜन. ହଁ. ସो ହଁ. सो मुनरो इंट्रोड्यूस करथिले कोठी ना माड्रास एंड बॉम्बे रे इंट्रोड्यूस करथिले. Under the system, the cultivator was to be recognized as a owner of his plot, and land was subjected to payment on of the land revenue. So, ଯେମିତି land revenue directly peasant ଦଉଥିଲେ. या ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ରେ ଜମିଦାର କଲେକ୍ଟ କରିକି ସରକାରକୁ ଦଉଥିଲେ. ଏଇଟା ସେହା ନୁହଁ. So, reason for peasant dissatisfaction. The settlement under Rayotari system was not made permanent. It was revised periodically after 20-30 years when the revenue demand was usually raised. Basically, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଏ? ଚେଞ୍ଜ କରାଲା ଏଥିପାଇଁ ନା revenue କୁ demand ବଢାଯାଏ. So, Rayotari settlement did not bring into existence a system of peasant ownership. Peasants soon discovered that large number of zamindar had been replaced by one giant zamindar, Kiena the state, and those they were government tenants whose land was sold if they failed to punctually pay the land. कौन है लोग पैसा दे पाले, लोग जे पैसा दे पाले नहीं सी कौन कले, जमी छाड़ी की जंगल को पड़े गले. पैसा दे पाले कौन करिवे, पैसा दे पाले नहीं तो से जमी छाड़ी दे की जंगल को पड़े गले. ଆଉ କଣ? Again, the raid's rights to ownership of his land were also negated by the following factor. In most of area, the land revenue fixed both high price land revenue ଥାଏ. ଆଉ ନିଜର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ. ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେଲାନି ବି ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ. ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଖରେ ହେଲାନି ସରକାର କିଛି. So government retain the right to enhance land revenue at will. सरकार कौन ना मन इच्छा लैंड रेवेन्यू बढ़ेवा ता मन इच्छा रे सरकार करिया को लागला. तो ये प्रॉब्लम हैला. So the railroad had to pay revenue even when his produce was partially or wholly destroyed by the drought or flood. अरे जदि चाष करला, चाष तो सेही समय एमिति हवा भी बड़े कष्ट थिला. ଆଉ एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज एमती नथिला. Apart from this, they have to pay. In spite of having drought or a flood, they have to pay revenue. So all these factors
particularly the non-availability of ownership rights, failed to satisfy the aspiration of the peasant. ଆଉ କଥା ହେଲା owners law land ର honor କିଏ ରହିଲା ସରକାର state. State is the owner of the basically land. ମାନେ କଲ୍ଟିଭେଟର କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଗଲା ଅନର, ବଟ୍ ଇନ୍ ରିଏଲିଟି ସେଟା ନଥିଲା, ଇନ୍ ରିଏଲିଟି ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍। ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖ ଯଦି 20 ମାର୍କ ଏଟା ପଡିଥିବ, 20 ମାର୍କ ପଡିଥିବ, ତୁମେ ୟାର ଲେଖୁନା ସବୁ ଲେଖିଦେଲ, ଓକେ। ବାକି ଲେଖିବ କଣ ନା କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ या परमानेंट सेटलमेंट ରୁ ୟାର କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। परमानेंट सेटलमेंट ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଦବ। ସो ରେଓତାରି ସେଟଲमेंट ଦେଖିଲ ନହେଲେ परमानेंट सेटलमेंट ଦେଖି ଦେଇଥିବ, या महालरी सेटलमेंट देखी ଦେଇଥିବ, এই তিনটা ଦେଖି ଦେଇଥିବ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ क्वेश्चन କଣ କରିବ कंपैरेटिव सेंस ଦେଇଦବ ତିନଟା ଯାକ, है ना। ତିନଟା ଯାକ कंपैरेटिव सेंस ଦେଇଦବ କି ରେଓତାରି सेटलमेंट, महालरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट ଭିତରେ डिफरेंस କର, डिफरेंस କର। So British conquest of India differed from all previous foreign conquests. Examine this statement in the context of economic policy followed by British in India. ओके सत्यजी खाली एति कह दूची रेओतारी और परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट रो डिफरेंस है कोन। परमानेंट सेटलमेंट कोन, ये तुमरो रेंट जो तुमरो प्राइस जो फिक्स थाए आ तार ओनर ऑफ द लैंड किए थाए जमींदार। जमींदार को रेस्पोंसिबिलिटी दिया जाए गोटे पर्टिकुलर एरिया रो सीए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिवो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिकि काहा को देबो तुमरो सरकार को, स्टेट को, तो ब्रिटिशर्स मान को देबो। तो एथरु कोन हैला आ जमींदारी सेटलमेंट कोन सिस्टम थिला कि गोटे लैंड रो गोटे लैंड तार 1/11 भाग माने 11 भाग रु गोटे भाग किए नबो जमींदार। किए नबा जमींदार। सो जमींदार कोन कला एई समय एक्सप्लॉयटेशन करिया को लागिला, मैक्सिमम पॉसिबल वेले लैंडलॉर्ड किए रहउतला जमींदार। आ लिखि दबो कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करथिले, लैंडलॉर्ड किए थिला जमींदार। आ सी बेसिकली जेते जदी लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करिवो तार सी 1/11 भाग पाइबो। तो 1/11 ता माने सी तार मैक्सिमाइज प्रॉफिट करि परियो चाहिबो। तो सेही अनुसार कोन हैला चासी माने ही एक्सप्लॉइट होथांती, जे रियल कल्टीवेटर सेही माने ही एक्सप्लॉइटेशन होथाय। तो दैट इज द बेसिक। एठी कोन रेओतारी सेटलमेंट रो पीजेंट को या कल्टीवेटर जे रियल चाष करथला ताको ऑनर कर दिया गला, बट रियलिटी रे भी सेटा करू नथिले, ब्रिटिश ता हाथ रो बेसिकली ओनरशिप रखिथिला। बुझी गला सत्यजीत, गेटिंग और नॉट? ओके, सो नेक्स्ट देखिबा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम ऑल प्रीवियस फॉरेन कॉन्क्वेस्ट। काहे की व्हाई? Examine the statement in the context of economy policy followed by British. Why British रो जो basically conquest, so economy policy respect कहूची तो सही अनुसार कहबो। So the economy policy followed by British led to rapid transformation of Indian economy into a colonial economy, and structure were determined by the needs of British economy. कौन पाई रीजन कौन? ब्रिटिश वर्ल्ड रो फर्स्ट कंट्री थिला जे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेठी स्टार्ट हितला। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कंट्री रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हितला। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हेले कौन दरकार तांकर? तांकर दुईटा जिनिस दरकार, गोटे ला रॉ मटेरियल आ गोटे ला मार्केट। एई दुईटा किए दे परिबे दुईटा जिनिस?
इंडिया बेस्ट कंट्री जे कि प्रोवाइड करि परिबो. यस. So British basically main jinsa ita point lekhibo. So in this respect, British conquest differed from all previous foreign conquest. Kono? The previous conqueror had overthrown Indian political power, but had made no basic changes in the country's economic structure. But they had gradually become part of Indian life, political and as well as economy life. जी अलगा आस्तिले. But एमाने ब्रिटिश पूरा सिस्टमेटिक चेंज कर देले. So the peasant, artisan, and trader had continued to lead the same type of existence as before. So the basic economic pattern that self-sufficient rural economy had been जोंडे की perpetuated. So change of ruler had merely meant change in the personnel of those who appropriated the peasant surplus. They always remained foreigner in the land, exploiting Indian sorry resources and carrying away Indians' wealth as a tribute. So we may examine this with the help of following two gradual economic process. Kono. The first ruins of artisan and craftsmen. किए कला British. कहीं British को market दरकार है India रे. The cheap machine made imports flooded in the Indian market after the Charter Act 1813, following the one-way free trade for the British citizen. 1813 एक्ट रे कौन ହେଇଥିଲା? 1813 एक्ट रे कौन ହେଇଥିଲା? 1813 चार्टर्ड एक्ट कौन होता मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया एक्सेप्ट तुम टी आउ चाइना सहित ट्रेड छाड़देले बाकी फ्री बेसिकली यूरोप अदर ब्रिटिश कंपनी को एलाउ कराइला इंडिया आसी ट्रेड करने तो से माने कौन कले इंडिया रे आसिकी से माने कहीं कि से इंडिया नहीं जिवे रॉ मटेरियल नहीं जिवे फिर सेटू बनेबे ब्रिटिश रो बनै के आनिबे इंडिया है ना तो सेई जिनस को एवॉइड करिया पई सेमाने कोन कले ना डायरेक्टली मशीन नहीं असले सी गले भाई एठी नबा रॉ मटेरियल नबा प्रोड्यूस करिबा इंडिया रे बिकिबा बहुत बड़ मार्केट एंड एज वेल एज आउ कंट्री को एक्सपोर्ट करिबा हमें ये गोटे सिस्टम आउ गोटे सेई समय वर्ल्ड कंडीशन कोन हेतिला नेपोलियनिक कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन बोनापार्ट तार कॉन्टिनेंटल सिस्टम रे कोन कर देथिला ना यूरोपियन ब्रिटिशर्स गुड्स को एलाउ कलानी यूरोप रे काना यूरोपियन ता फ्रांस और अदर तार आलिस कंट्री और यूरोप रो प्राय नेपोलियन रो आलिस प्राय सब मेजर कंट्री थिला तो ये जिनस जो ये चार्टर्ड एक्ट बनागला चार्टर्ड एक्ट रे कोन कला ना ब्रिटिश ट्रेड को फ्री ट्रेड करागला ब्रिटिश सिटीजन पाई बट इंडियन ट्रेड को इंपोज करागला सो दैट इंडियन रो जो हमरो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो हमरो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सीए ताकू अधिकार टैक्स निया गला तार डिमांड बट बहुत थिला तार अधिक टैक्स निया गला आ याकू फ्री ट्रेड कर दिया गला सो दैट चीप मार्केट चीप प्रोडक्ट्स आसीबो जेमि चाइना करे है ना so on the other hand Indian product found it more and more difficult to penetrate the European market କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରି କରିଦେଲା ଏମାନେ ନେଇ ଶସ୍ତାରେ ବିକିଲେ କିଏ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ है ना तो ruins the artisan craftsmen so tariffs of nearly 80% were imposed on Indian textile रे वर्ल्ड रो से समय सबुठु ब्रांडेड कपड़ा जदी कहजिवो इंडियन क्लॉथ या इंडियन टेक्सटाइल so इंडियन क्लॉथ जदि 80% तुम टैक्स लगे टेरिफ टेरिफ माने कोन जेतरे बाहर कंट्री की जो जेमति धर चाइना गुड्स आसुची आमे सेथरे एबे कहउची काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ना या इंपोर्ट ड्यूटी कहउची तो लगे दउछु सो दैट इंडिया मार्केट रो सी बेसी डिस्क्रिमिनेट करि न पारु सी गुटे मोबाइल को 10,000 बिकी दबो आउ अलगा मोबाइल धर 20,000 बिकु तो सेम फीचर तो ता मोबाइल डिमांड आसीबो Yes. So tariff were nearly 80% and imposed on the Indian textile so that Indian clothes could no longer be cheap. In by after 1820, European market were virtually closed to Indian export and cheap British made clothes flooded in the Indian market. माने कौन इंडिया रे जो हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को ये खत्म कर दिया so the newly introduced rail network held European products to reach the remotest corner of the country. From being a net exporter, India become the net importer.
ଆମେ ସେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଥିଲୁ। ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର। ଆମର ଇକୋନୋମି ସେଇ ସମୟରେ 30% ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। But situation changes here. The loss of traditional livelihood was not accompanied by the process of industrialization in India as had happened in other rapidly industrialized country of the time. So India industrialization helani India deindustrialization hela basically. This resulted in the deindustrialization in India at a time when Europe was witnessing a re-intensified industrial revolution. ବୁଝିଗଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଟା କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଏଟା ୟାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଏଗୁଡାର ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କୁ ତୁମେ ଟେକଲ କରିବା ଶିଖ ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ନଲେଜ ଥିବ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ଦବ ଏକ୍ସାମିନର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ଦବ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ପଢିବ ମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ଲେଖିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟାକୁ ବୁଝ ବେସିକାଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କଣ କହୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ର ଇକୋନୋମି ପଲିସି କହୁଛି So this happened at a time when Indian artisan and handicraft men were already feeling the crunch due to loss of patronage by the princess and nobility, who are now under the influence of new Eastern taste and values. Many artisans faced with diminishing return and repressive policy in Bengal during the company's rule. Artisans were paid low wages and forced to sell their product at low prices. And ତାଙ୍କର ଯୋଉ profession ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ସେମାନେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସିକାଲି ଓଭର ବର୍ଡନ ହେଇଗଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସିକାଲି ବି ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମର କୋଭିଡ ହେଲା କୋଭିଡ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିକି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଫେର ଲୋକ ଗଲେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବଟ ଯଦି ଲୋକେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆସି ରହିଗଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କଣ ଡିସଗାଇଜ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇଟା କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ଚାରିଟା ଲୋକର ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଠି 8ଟା ଲୋକ କାମ କରିବେ that leads to କଣ ହବ poverty increase କରିବ ଭିଲେଜ ଇକୋନୋମି ଇଏ କରିଯିବ ଆଉ ପିଜାଣ୍ଟିକୁ impoverish କରିଦେଲା impoverish impoverishment of peasantry so government only interested in the maximization of rent and securing its share of the revenue it enforced permanent settlement system in large part of India ये भी जानी सब तो ये सब इकोनॉमी पॉलिसी जमींदार विथ इनक्रीज पावर जमींदार ताको मिसयूज कले अगेन जमींदार मध्ये एटी मिसयूज कले demand illegal dues and beggar to maximize their share in the produce and as such had no incentive to invest and prevent improvement of the agriculture ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭରବର୍ଡେନ୍ କରାଗଲା ପିଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଗଲେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଆଉ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ଭିତର ସେଟିଂ ଥାଏ ତ ଜମି ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନିଆ ହଉଥାଏ ଯିଏ ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିଥାଏ ଜମି ଛଡେଇ ନିଆ ହଉଥାଏ ଇଏ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା 6 ମାସ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହେଇଛି So जमींदार मनी लेंडर ये माने बेसिकली पीजांट बिकम लैंडलेस सब खत्म हो गया दीज आर जो थिला इकोनॉमी एक्टिविटी 25 मार्क 20 मार्क्स जहाँ असली तुम आराम से लिखि परियो बहुत जिन सब कहै तुम आराम से पॉइंट फॉर्म लिखि परियो ओके केमिति स्टार्ट करिवो जानि पालो केमिति कोन को एरिया रु स्टार्ट करिवो एवं केमिति ताको लिखिवो ओके एई जिवो तो इकोनॉमी पॉलिसी बेसिकली ब्रिटिश इंडिया क्वेश्चन को आगे भल से बुझिवो आगे कौन करिवो ना कीवर्ड को टिके अंडरलाइन करिवो कीवर्ड को अंडरलाइन करिकि ताको बुझिया को ट्राई करिवो किछि क्वेश्चन आसीबो टिके तुमको टफ लागिवो सेही क्वेश्चन गुडा को टैकल करले तुम भलो मार्क्स पाइबो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जदि सब इजी क्वेश्चन कर दे पड़ियो जब डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा कर दे पड़ियो पळि आसीबो पर प्राय समस्त सेही डायरेक्ट क्वेश्चन करिवे तुमे भी करिवो ताको भी करिवो आ जोना डिफिकल्ट आसीबो ताको भी करिबा दरकार ओके नेक्स्ट throw light on the program and activities of the early nationalist. Throw light on the program and activities of the early nationalist.
So early nationalist leader believed that a direct struggle for political emancipation of the country was not yet on the agenda of the history. ସେଇ ସମୟରେ ବେସିକାଲି ରିଏଲି ହେଲା ଇନିशियल ଫେजेस ରେ କେହି ଚାହୁନଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ କୁ ହଟେଇବା ମାଇंड ରେ କେହି ଚାହୁନଥିଲେ एजेंडा कौन थिला नेशनल फीलिंग धीरे धीरे लोकों को भीतर आनिबा आगे नेशन कौन जानतु से फीलिंग को कंसोलिडेट करिबा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को गोटे प्लेटफॉर्म को आनिबा ओके ताको ट्रेनिंग दबा पॉलिटिकल एजुकेशन केमिति हुए ये सब सिखेइबा सो दीज आर जो बेसिकली प्रोग्राम इनिशियली ताको सिखाउतला the first important task in this respect was the creation of public interest in political questions and the organization of public opinion on the country. Secondly, popular demand had to be formulated on a country-wide basis so that emerging public opinion might have an all India focus. First important task कोना public interest को create करा पॉलिटिकल क्वेश्चन पचार जीवो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन या कुनिया जीवो ये सब करा जीवो आउ सेकंड कोन कि जो डिमांड करा जीवो कि एई डिमांड को लोकन को कोन ओपिनियन ताकर दोजन ता अनुसार ऑल इंडिया फोकस बेसिस रे गोटे डिमांड करा जीवो तो ये धीरे धीरे कोन ना नेशनल फीलिंग को ताको भीतर अराउज करा जीवो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल इज नेशनल यूनिटी हैड टू बी क्रिएटेड सबुठ बड़ जिंस है कोन ना नेशनल यूनिटी देखो ये भले क्वेश्चन जोटा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना यार बेसिकली क्लोज एंडेड किछि ना बट तुम्हें जो लेखिवा को तुम्हें चिंता करिवो आगे कोन कहिछि प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट सेही जिंस गोटे लेखिवा अर्ली नेशनलिस्ट कोन कोशिश करथले कोन तांकर आईडिया थिला सेही जिंस को तुमको लेखिवा को दरकार so the early national leader were fully aware of the fact that India had just entered the process of becoming a nation. In other words, India was a nation in making. I hope समझ जानिथिबो what is the difference between nation, country and state. I hope समझ जानिथिबो. If you don't know खाली simplistic way रे कहि दउची nation is a cultural concept, state is a political concept and country is a geographical concept. So India as a nation means culturally we want to India as a united India. Culturally we want united. We have a diversity but we want unity in diversity. तो यही सब जो नेशनल यूनिटी से बड़े सेतपई नेशन को आउची एटी नेशन को आउची नेशनल लीडर नेशन इन मेकिंग इंडिया कौन ता पूर्व कंट्री नथिला कि इट वाज कंट्री है ना इंडिया वाज स्टेट पॉलिटिकल हेड थिले अशोका थिले बट नेशन नथिला लोके मिसी की केबे भी लड़ी नथिले so Indian nationhood had to be carefully promoted kaina Indians had to be carefully welded into a nation ताको आनियो so politically conscious Indians had to constantly work for the development and consolidation of the feeling of national unity irrespective of region caste and religion. The economy political demand of the early nationalists were for जोंडे एटा लिखिबो economy political demand कोन लिखिबो what you will write drain of wealth theory like दादाभाई नारोजी एमजे राणे आरसी दत्त ये सब इकोनॉमी जोंडे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकी डिमांड करथिले कि इंडिया को तार किछि ये क्रिटिसाइज करथिले ब्रिटिशर्स को ये बेसिकली लोगों को जागृत कला हां एमिति भी होची एमिति ब्रिटिश करूची ओके सेही बेसिस रे माने यूनिफाई करिया चाहले कॉमन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ओके ये आइडिया को तुम भल से मन रखतो वेरी वेरी इंपोर्टेंट then trace the existence of militant nationalist school of thoughts in India and highlight their distinctive political aspect of their program. Trace the existence of militant nationalist school of thoughts in India and tankara अलगा कोन थिला बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट जे देखले बेसिकली सेटा हला तुमरा मॉडरेट फेज है ना इनिशियल पार्ट थिला मॉडरेट फेज
हाँ सत्यजित दे देवी पीडीएफ दे देवी So militarism. So from almost beginning of the national movement, a school of militant nationalism had existed in the country. This school was represented by a leader like Ras Bihari Bose, Ashwini Kumar Dutt in Bengal, and Vishnu Shastri Chipnukar in Maharashtra. Uh, Chiplunkar in Maharashtra. So एमाने initial school of thoughts थी militant nationalist. Then the most outstanding representative of this school was Bal Gangadhar Tilak, later popularly Lokmanya Tilak. So at the dawn of 20th century, the school of militant nationalism found a favorable political climate and its adherents came forward to lead the second stage of national movement. जोटा कि लाल बाल पाल most outstanding leader of militant nationalism apart from लोकमान्य तिलक किए थे विपिन चंद्र पाल और अमित घोष लाला लाजपत राय बुझा नहीं केमिति तुम्हें क्वेश्चन लेखिब जानी परछ तो बेसी याडू साडू गपिया को ट्राई करिवनी बेसी तुम स्ट्रेट क्वेश्चन आंसर को आसीबो तुम पाखरे समय मिलिबो नाही तुम 20 मार्क्स रो माने 250 वर्ड लिखिबो 250 वर्ड माने पाखापाखि 2 पेज देन so then 10 मार्क्स लिखि माने 150 पेज माने 1 पेज रु टिके अधिक लिखिबो तो तुम पई एतेटा 20 टा क्वेश्चन से अनुसार हिसाब कर दबो जदी 30 रु 35 पेज रु 40 पेज लिखियो पड़िबो तुम पाखरे समय नाही स्ट्रेट आसीबो आ फर्स्ट क्वेश्चन भी तुम स्पीड को बरकरार लिखि रखिबो है ना अधा धरे रखिबनी एसआर आज आज माने इनिशियली टिके स्लो स्लो लिखिबो आराम से लिखुथबो लास्ट रो हड़बड़ हड़बड़ खाली छाड़ी भी जीवो ट्राई करिवो 300 रु 300 मार्क अटेंड करी आसीबो किछि भी लेख लास्ट रे जतिक पारिबो किछि भी जानिछ ता विषय लिखि दबो किछि भी जानिछ बट लेखि कि आसीबो गुट्टी भी क्वेश्चन छाड़िबो ओके गुट्टी भी क्वेश्चन छाड़िबो नाही ट्राई करिवो सब लेखि कि आसीबो देखिवो गुट्टी गुटे मार्क तुमरो लाइफ रो बहुत बड़ इंपैक्ट क्रिएट करे काहे गुटे मार्क तुमरो मेक और ब्रेक क्रिएट करती So the distinctive political aspect गोटे मार्क पॉइंट मार्क रो दी तीन रा से बेले तुमर चारिटा पेपर सॉरी चारिटा ऑप्शनल दीटा जीएस एसे जदी गोटे गोटे मार्क रे हेले भी 7 8 मार्क एक्स्ट्रा हलानी तुमर सिलेक्शन हेई पारे किबा न होई पारे किबा कोठी सर्विस ओएस मिलुथबो किबा ओएफएस मिलुथबो तार भीतर डिफरेंस भी आसी जीवो है ना तो बहुत किछि फरक पड़े छाड़ीबो नहीं ट्राई करिवो किछि भी तुम जानिथिबो जहा भी पुरेबो ओके बट स्ट्रेट क्वेश्चन रो लेखिया पर आगे स्ट्रेट गुळे घंटी किछि करिवो नै The distinctive political aspect of the program of the militant nationalists were as follows. They believe that Indians themselves must work but their own salvation and make this sort to rise from their degraded position. ये भाई देखो इंडिया निजे तांकर ओन अचीवमेंट पाई निजे काम करे दरकार they declare the great sacrifices and sufferings were needed for this task they declare that great sacrifices and suffering are needed for this task एमाने कहउतले सफरिंग दरकार जेमति तुम पई तुमे ओएस हवा पई तुम पई बहुत किछि सफरिंग एंड सैक्रिफाइस करियो पड़िबो है ना यू नीड टू डू दिस चाहे आखि पोड़ू चाहे देह पेन हो कुछ भी ही जाओ देयर स्पीचेस राइटिंग तुमे एग्जाम लिखले कि तुम हाथ पेन करिवो तथा लिखियो पड़िबो लेख चली थाओ so this their speeches writing political work were full of boldness self confidence and they considered no personal sacrifice too great for the good for the country so they denied that indian could progress under the benevolent guidance and control of the english एमाने कहले कहना यांको पूर्व जो मॉडरेटर थांती से माने कोन बिलीव करथाती कि इंडिया प्रोग्रेस एमिति करि पारे जदी इंग्लिश रहिबो ता देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस बट एमाने कहले ना इंडियन प्रोग्रेस करि परिबे आमे निज इच्छा रे करि परिबे आमे निजे करि परिबो
They deeply hated the foreign rule, and they declared in a clear-cut manner that Swaraj or independence was the goal of the national movement. For the first time MNC କହିଲେ. They had a deep faith in the strength of the masses and they planned to achieve Swaraj through mass action. ଯେମିତି moderator mass action କିଛି କରୁନଥିଲେ. masses ଉପରେ ତାଙ୍କର trust ନଥିଲା. ये सब पॉइंट 5टा पॉइंट यहाँ पर कहली ता पूर्व ये सब लिखिबो तुमको आराम से 10-15 मार्क रु तुम आराम से लिखि दी परिबो आराम से इवन 20 मार्क भी चाहिए लिखि दी परिबो तांको प्रोग्राम किछि लिखि देबो स्वदेशी राइट होगा या नहीं होगा देन इवैल्यूएट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 तो एक टू क्वेश्चन पचारुची एक टू क्वेश्चन पचारुची मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 Montego Chelmsford from 1919 এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ये तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट try to read all these things the whole of parliamentary reform was a great improvement from the act of 1892 nevertheless it failed to satisfy the long longing of the people satisfy the long demand of the people the reform 1909 afforded no answer to the Indian political problem jota thila seta delani its basic weakness kona there are no uniformity in the voting rights and it was very narrow biased in favor of Muslims the council had no real power in the field of legislation and finance and they were only debating bodies debate karibe kich powers rahiboni and which aired certain circumstances council could not discuss any topic related to government income and expenditure ये भी डिस्कशन करी परिबन कौन फायदा member could propose revolution on matter of public interest but head of the council could use veto official majority in the central legislature kept all authority in the government hands as in provincial council European Anglo-Indians Muslims landlords always sided with the government and the officials were in this manner in the majority. The disqualification clauses for the election to legislature kept extremist nationalists out of the council. Neither subordination of provincial government to the government of India nor that of the latter Secretary of State was relaxed. The legislative council reassembled darbars, resembled darbars, not parliamentaries. Darbar valia resemble करे not parliament. So the system of government in India remained benevolent despotism or constitutional autocracy valia ये ताको मानता. So question थिला कोन इवैल्यूएट करिया पे. एठी इवैल्यूएट रे तुमे क्वेश्चन हला तुमे भल से बुझिबो. इवैल्यूएट माने कोन तुमे मॉडल मिंटर रिफॉर्म रे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखिबो. ना कि व्हाट इज मॉडल मिंटर कोन थिला सेट लिखिबो. डायरेक्टली कोन थिला तुमे लिखिए पचारनी. तुमे हां by explaining यार पॉजिटिव और नेगेटिव या तुमे जहां भी इवैल्यूएट करो सही समय तुमे ताको मेंशन करि परिबो. बट इवैल्यूएट मींस इवैल्यूएट खाली तार एक्ट भीतर कोन थिला सेटा नय. वेरी इंपोर्टेंट दिस वन ट्राई टू रिमेंबर ये क्वेश्चन रो आंसर मु देखली कि कोन कहली ता बेसिक वीकनेस कोन है ना एई जिंस गुडा मन रखिथिबो इंडियन पर्सपेक्टिव देखिया बेसिकली नॉर्मली वीक रो पॉजिटिव जे देखिबा कि वोटिंग राइट दिया हितला किछि वोटिंग राइट दिया हितला फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 1918 89 92 रे जोटा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थिला इलेक्शन मेंशन नै नथिला सेटा एबे मेंशन हला फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट टिल्टेड हेवीली टुवर्ड्स मुस्लिम काई मुस्लिम फर्स्ट टाइम कम्युनल बेसिस रो बेसिकली रिलीजन बेसिस रो यस रिलीजन बेसिस रो ये गला वोटिंग राइट दिया गला separate electorate for Muslim. So the economic backwardness of the country and consequences of colonial underdevelopment contributed to rise of communalism. ये सब क्वेश्चन गुडा को तुमको टिके डिफिकल्ट हो लिखिया भाई. तो डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम देखिलो केमिति क्वेश्चन आस्तिला है ना से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आसीबो नै. किछि क्वेश्चन आसी पारे किछि क्वेश्चन एमती बुलेइबो
So due to lack of modern industrial development, unemployment was an acute problem in India, especially for the educated. So there was in consequences an intense competition in the existing jobs. ये नॉर्मल जिनस खाइबा पाइबनी माने ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ହଉଛି ଜବ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ଟେରରିଷ୍ଟ ବେଶୀ ବଢିବେ violence ବେଶୀ ହବ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ ବେଶୀ ହବ the far sighted Indian diagnosed the disease and worked for an economic and political system in which the country would develop economically, in which therefore employment would be plentiful. However, many others thought of such short-sighted and short-term remedy as a communal, provincial, and caste reservation in the jobs. However, many others thought that of short-sighted and short-term remedy as a jobs. So they aroused communal and religious, later caste and provincial passion in an attempt to get larger share of the existing limited employment opportunities. So to those looking desperately for employment, such a narrow appeal had been certain immediately attraction ଥାଏ. So କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଏହା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଜେନୁଇନଲି ଦରକାର ଥିଲା ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କ'ଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଥିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସିକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ରିଲିଜିୟନ ବେସିସର ରିଜନ ବେସିସର କାଷ୍ଟ ବେସିସର ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ जोटा कि कम्युनालिज्म को प्रमोट बेसिकली कम्युनालिज्म माने नुहे कि खाली गोटे साइड रु माने एमाने डिवीजन क्रिएट करथा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जोटा कि थ्रो रे एथरा आउ गोटे मेंशन करि परिबो एथरा आउ गोटे मेंशन करि परिबो जोटा कि तुमरो मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन एवं कम्युनल अवार्ड जो सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो हैला सो इन दिस सिचुएशन हिंदू मुस्लिम कम्युनल लीडर caste leader and officials followed the policy of divide and rule were able to achieve some success. So many Hindus began to talk of Hindu nationalism and many Muslim and began to talk about Muslim nationalism. So example दबो Hindu nationalism कौन ना हिंदू महासभा हैला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैला हि मुस्लिम कौन ना मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हैला 1906 रे तार माने रिफ्लेक्शन थिला कौन ना हिंदू महासभा एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये सब रिफ्लेक्शन तुम्हें लिखि पारिबो सो द इमेचर पीपल फेल टू रिजेक्ट that their economy educational cultural difficulties left to me extremely हाँ immature people fail to reject their that fail to reject their economic educational cultural difficulty or the result of common subjugation to the foreign rule and economic backwardness and that only through common effort could they free their country develop in a economically thus solve the underlying common problems such as unemployment. So in this way, economic backwardness of country and consequence of colonial underdevelopment also contributed to rise of communalism. Similarly, write short notes of history Lucknow session of Congress. This is straightforward question. This is straightforward question. Can you able to write or not? Lucknow session आइतला 1906 रे 16 रे. So Congress जोटा कि यूनाइटेड सेशन आइतला सूरत सेशन रे स्प्लिट हवा परे एठी यूनाइटेड सेशन First Lucknow session is a memorable to history development कौन ना first doing INC और moderate extremist united हितले और second कौन हितला Congress and All India Muslim League डिफरेंस हटे कि जॉइन को हैंड कले सो लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये प्रिजाइड करथिले अंबिका चरण मुजुमदार फाइनली रीएडमिटेड द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक टू द कांग्रेस फोल्ड so various factor facilitated this basically reunion old controversy meaningless हे गला both moderate extremists realize कले कि split हेले हमर किछि फायदा नहीं ब्रिटिश रो फायदा Animation and Tilak had made a vigorous effort for reunion and death of two moderates, Gokhale and Firuza Mehta, had led to the moderate opposition to the extremists facilitated the reunion. एमाने बेसिकली फिरुसा मेहता बेसिकली हेड थिले लीड करथिले opposition
So the desire for a united front with the Congress against British imperialism was growing among the younger generation of the English educated Muslims. The younger generation of educated Muslim was turning to bolder national politics. ଉପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ even ଜିନା ତ ଆମର Indian national politics Tilak the league signed Lucknow Pact 1960 ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରାଗଲା principal separate electorate was accepted under representation of Muslim in Muslim majority area, over representation of Muslim in minority area, representative of government and dominion status for India. ये सब basically लखनऊ पैक्ट रे साइन करा ये सब लेखि परिबो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट या कोन थला जानिया दरकार कि केतला फैक्चुअल टाइप रो क्वेश्चन ट्राई करिवो लिखिया पय बहुत इजी अछि पॉइंट गुड़ा सब लिखि दिए था जदि भी मन थाउ फिर भी पॉइंट मन रखि दे लिखि दियो एग्जाम पूर्व देखि दी पळेबो सकाळ सकाळ देखि दी पळेबो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एथर तो शायद उड़िया इंग्लिश पर गुटे दिन गैप अछि नै तो गोटे भलो हिची जीएस पय गुटे दिन समय मिली छि बहुत भलो हिची एथर So understanding drain of wealth, India was exploited economically by British Empire, which drained its wealth in all possible form. Drain of wealth theory, basically kiye Dada Bhai Naroji. So the manpower, material and resources to serve the colonial interest. तो ड्रेन कौन कौन करथिला हमर वेल्थ मैन पावर को ड्रेन करथिला मटेरियल को ड्रेन करथिला रिसोर्सेस को ड्रेन करथिला it transfer Indian economy into it transfer Indian economy into dependent and developed economy. Dada and Naroji R.C. Dutt, through their writing books, Poverty and Unbritish Rule in India and Economic History of India, R.C. Dutt Economic History of India, highlighted this process of draining India's wealth by British Empire. So there are two main sources of drain of theory. कौन थिला So the direct drain of wealth by the way of salary and allowances of the British officer salary and soldier and payment of salary and allowances of Secretary of State and his office in the London भी थिला सेठी पैसा नथले the direct drain होतला second कोन indirect drain of wealth through export of Indian raw material export करथले and import of industrially produced goods final goods जोंडे की so British capital invested in India in shipping and railways etc. under guarantee scheme in which interest were remitted every year. Thus, trade was biggest source of drain of wealth. So, effect on Indian economy. The exposure of true nature of British rule by Dadabhai Naroji exposed kole na and other aroused Indian against their exploitation. This aroused fully reflected at the time of partition of Bengal when Indian nationalists decided to wage economic war against partition in the form of Swadeshi and boycott, which remained a permanent weapon till the independence. Gandhiji भी से use करते non-cooperation movement. Thus, drain of wealth provided a cause as well as weapon in the form of Swadeshi and boycott to fight against colonial rule. ये ଗୋଟେ weapon ଦେଇଥିଲା बहुत important है ये statement टा बहुत important very important drain of wealth related जहाँ भी कहबो so drain of wealth provided a cause as well as weapon in the form of Swadeshi and boycott to fight against colonial rule very important ହେଇଯିବ ଲେଖି ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି क्वेश्चन काली आनिबी तुमर प्राय एरिया मॉडर्न हिस्ट्री तुमर कवर कर देबी हो ए बडा क्वेश्चन ର आंसर लिखियो तो मार्क दबनी बढ़िया मार्क पाइबो देखो मु मॉडरेटर पॉलिसी कहि देली extremist policy କହିଦେଲି question ହେଲା what are the objective of demands of moderates objective and demands of moderates
Discuss the main difference between moderate and extremist. याकर डिमांड कौन थिला और डिफरेंस देखिपारे नहीं. So the moderates had following objective during the early 20 कौन promote fraternity among the Indians, basically nationalism के arouse करिबा, oppose social underminity जोने की caste religion basis से जो ये थिला indemnities, then discuss common problem and plan future line of action, that is representation of demand before the government, responsible government ये सब काम करथांती. Moderate plan of action comprise three elements जोटा कि policy of three P's: protest, prayer and petition. ये मन रखियो, very important. Moderate लिखियो ना ये point लिखियो, सब एग्जाम में एटा खुजिबा आगे, एटा लिखि देला काम होइला. The constitutional agitation and step by step consciousness. So three plan basically तीन टा plan मन रखियो, गोटेला three P's, policy of three P's: protest, prayer and petition, constitutional agitation and step by step concession. Then demand of the moderate expansion of Indian Council and its Indianization, Indianization of civil service, liberation of press, ये सब डिमांड करते हैं. Withdrawal of discriminatory law such as Arms Act, reduction of in home charges and expense of military expense को कम करिया कहते हैं. Promotion of Indian industry and reform in land revenue system मध्य ये डिमांड करते हैं. So during early phase of Congress or moderates, greatest contribution was that it bring people of various part of country to a common platform. This is very important. This is the greatest contribution of moderate basically. And from the very beginning, it strive for national unity. It remains secular, which is evident from the fact that it's first for president. Hindu thile K. W. C. Banerjee, उमेश चंद्र बानर्जी, पारसी थिले दादाभाई नारोजी, मुस्लिम थिले बद्रुद्दीन त्यागजी, ख्रिस्टियन थिले जॉर्ज यूले. चारि जन बेसिकली प्रेसिडेंट थिले कांग्रेस रो, जे कि डिफरेंट रिलीजन रो. सेथि पे ये रिफ्लेक्ट कराए ये कोन सेकुलर बोली. Thus, moderates sowed a seed of nationalism as well as nationalism well and deep. However, its objective and methods disillusioned the neo-nationalists or extremists like Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, or Arvind Ghosh. So it finally led to the split. तुम्हें difference दिरा यदि चाहिए it is लिखी परिवो. So moderate believed in a cooperation with British government while extremists believe in the non-cooperation and obstruction. Moderate believe in improvement through constitutionalization while extremists believe in passive resistance. Moderate aimed in responsible government while extremists aimed at a self-government. Moderate believe in prayer, petition and protest while imbibed in meeting extremists believe in passive resistance demonstration. है ना, ये सब देखिए किसी पॉइंट्स डिफरेंट यही परियो पूरा टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किसी दरकार नहीं. So discuss the home rule movement and its impact. Discuss the home rule movement and its impact. The home rule was borrowed from home rule movement of Ireland. I hope एटा तुम लिखि दे परिवो. एटा इजी अछि, बेसी किछि कष्ट नै. ମୁଁ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦଉଛି. The circular led to launching of home rule movement ଯୋଉଟା 1916 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା. 16 ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. Many Indian leaders are dissatisfied with program and policy of Congress and wanted a mass political movement in the true sense. First World War caused immense misery among the poorer classes of India. The war had brought every heavy taxation and increased prices. The moderates were disillusioned with the moral reform. The World War One also destroyed the myth of racial superiority of British and Europeans, thus boosting the moral of Indians. And the inspiration from the Irish Home Rule movement, Ireland Home Rule movement, inspiration. So objective कौन ना self government within British Empire, liberty, national education, social political reform. Annie Besant published Communal Will and in New India, Tilak published Maratha and Kesari. तो ये सब मैं लिखती परिवार. So causes of dissolve by 1980. It lost its momentum for the following year. Lack of effective organization. Basically dissolve काहे किया Organization नथले सेमती. Tilak absence from the scene due to
his visit to England for a Valentine Chirol's case, and Anivesant, unable to give a firm lead, left the movement leaderless. Suppression, conciliation, and suppression attitude of the British government. Suppression करियो फिर conciliation करियो फिर suppression करियो. ये attitude basically और ये करियो. So impact कौन हला? It जोड़े कि burdens जोड़े broaden कला base the national movement. Broader national movement को broad कला एवं it also credited her to the first to be the first movement for the self-rule or Swaraj in India. It gave to the nation a hardcore brand of nationalist who became the volunteer of Indian national movement under Gandhiji. It influenced the August 1970 declaration of Montagu and Montfort reform. A moderate in Congress completely lost the face, leading to re-admission of extremists in 1916 in Lucknow. ये तार ସବୁ ସବୁ ଏରିଆ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ହେଲା ତାର ପଲିସିସ୍ କଣ ଥିଲା ଟିଚର କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ତାର ପଲିସିସ୍ କଣ ଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖିଦେଲେ କ୍ଲିୟରଲି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଲେଖିବ ଇଜି ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ what is CR plan discuss the reason for the rejection by Muslim League CR plan माने राजगोपालचारी CR 4 March 1944 March 1944, Srirao evolved a formula called a CR plan with the full approval of Gandhiji for Congress League cooperation. Basically, League चाहूँला India और Pakistan चाहूँला ना Pakistan basis रा सी चाहूँला. So scheme कौन थिला? Muslim League was to endorse the demand for independence and cooperate with Congress in forming provisional government for the transitional period. ये जो पावर और ट्रांजिशन ट्रांसमिट हम इंडिया को दिया जीवो सेही पीरियड रे मुस्लिम लीग बेसिकली ताको एंडोर्स करिवे माने देन एट द एंड ऑफ द वार सरी गला परे जेतरो क्विट इंडिया मूवमेंट चलतिला ए प्लेबिसाइड हबो बेसिकली कहया माने कोन ट्रांजिशनल पीरियड रे मुस्लिम लीग कोऑपरेट करिवो आ इंडिपेंडेंस मूवमेंट पई कोऑपरेट करिवो एंड एज वेल एज प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होची सेहितरे भी हेल्प करिवो आ कोन ना आफ्टर द वार सरी गला परे वार माने वर्ल्ड वार भी थिला एंड एज वेल एज तुमरो क्विट इंडिया मूवमेंट एठी वार plebiscite of all the inhabitants in Muslim majority area in the northwest and northeast could be decide whether it is not any it should form a separate state or not. Basically plebiscite माने survey हबो है ना तुमरो referendum हबो referendum रे कोहा जीवो कि हबो ना नहीं. Okay, and third point कोन so in the event of separation agreement would be made for the defense इथरे कोन करा जीवो एई समय सेपरेशन जदी हला कोन करा जीवो ना डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन एंड अदर एसेंशियल प्रोसेस को याकू सेपरेट करा जीवो सेपरेशन एग्रीमेंट कोन डिफेंस कॉमर्स जदी सेपरेट हला रेफरेंडम परे प्लेबिसाइड परे जदी सेपरेट हला तले डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशन एंड अदर एसेंशियल प्रोसेस को सेपरेट रहिबो द टर्म वुड बी बाइंडिंग ओनली in case of transfer by British of full power and responsibility of the government of India. जेतळे ये गवर्नमेंट इंडिया अंडर रहिबे बट डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशन ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रहिबो बाकी सब पावर सेपरेट स्टेट पाखरे रहिबो पाकिस्तान पाखरे आ ब्रिटिश जहा बेसिकली पावर दबो से ट्रांसफर जहा हबो सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रहिबो इंडिया रे गवर्नमेंट तो रिजेक्शन काई कला इट वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी ये चाहतला मुस्लिम लीग जिन्ना demanded that the right to vote for the partition should be given to Muslim alone, not the entire population of the disputed area. देखला सब population काहे दिया केवल मुस्लिम ही अधिकार अरे ये कौन it also opposed the common end center concerned with the defense CR कौन कहितले राजगोपालचारी फॉर्मूला कौन थिला सी कहितले हमरो डिफेंस सेपरेट रहिबो एटा डिफेंस ता हला समस्त ऊपर रहिबो इंडिया गवर्नमेंट अंडर रहिबो बाकी ये सेपरेट डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशन ये जो कॉमन सेंटर रहिबो से थ्योरी की भी अपोज कर देले देन आउ गुटे लास्ट क्वेश्चन देखिबा डिस्कस
the contribution of Gadar party movement in the national movement. Gadar party ଜାଣିଛ? The revolutionary living in USA, UA, USA ହବନି, United States, USA ହବ. USA published a paper, Hindustan Gadar, edited by Lala Hardayal in commemoration of the revolt 1857. It was the name of the paper that revolutionary activities of Indian living in USA came to be known as Gadar Party movement. So, newspaper Gadar Party na hai. Sohan Singh Bhakna, Lala Hardayal, Lala Hardayal, Bhai Parvananda, Ramchand were important Gadar Party activists ଥିଲେ. Objective कौन थिला? To wage revolutionary war against Britishers, unite overseas Indian को गोटे unite करिवा, freedom ପାଇଁ ଲଢିବା, support financially, men and materially to Indian revolutionary, to instigate Indian soldier serving in British army to raise mutinies. In India, the Defence Indian Act was passed in 1950 to smash the Gadar movement. Large number of special court handed down severe sentence on the suspect from Bengal and Punjab. This trial resulted in 46 execution and 64 life sentences. When USA joined First World War, UK asked USA to part activist, cut the Gadar part activities. So Lala Hardayal moved to Germany. ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କୁ ମାନେ ଇଏ କଟ୍ କରିଦେଲା. Though Gadar party movement remained for 4 years, 13 ରୁ 17, but it led a brilliant chapter in the Indian struggle. These are ତମର तो बहुत ही इंपोर्टेंट इश्यू मु आज देखिदेली आउ काली किछि आउ 10टा खंडे इश्यू 15टा खंडे इश्यू देखिबा इंक्लूडिंग ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री देले कवर हे जो तुमर पार्ट ट्राई करिवो एटा को क्विक 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिखि देथिबो देन ताकू एक्सप्लेन करिवो. ओके, so thank you. If any doubt you have, you can ask me. Otherwise, आज सेशन गेट सारिबा. Okay, bye bye guys, take care.